Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs for 25th of September. The session will be quite interesting. In this video we will be talking about White Revolution 2.0. We will be talking about 6 year of successful implementation of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Here we will be talking about of various horticulture crops production. Then we will be talking about Drone Athon 2024 and Himtech 2024 events that were held in Ladakh. The session will be quite interesting and important, so stay tuned till the end. In this video, a total of 16 important current affairs will be discussed. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe to us as we are one-stop solution for current affairs. The content that we provide on daily basis is top-notch, and also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Then we are talking about national affairs, and in this too, Prime Minister Narendra Modi was on visit to Maharashtra on 20th of September recently, right? He participated in the national PM Vishwakarma program. He participated in the PM Vishwakarma program, right? And this PM Vishwakarma program, basically it marks 1 year of progress that was held under PM Vishwakarma. Apart from this, he also released a commemorative stamp here. Correct. Then he laid the foundation of PM Mitra Park. Where was it? This PM Mitra Park foundation laid? It was laid at Amravati in Maharashtra. This PM Mitra, it stands for Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Park, right? So this PM Mitra, it is related to textile. Then apart from this, he has launched Acharya Chanakya Kaushalya Vikas scheme and Punshalok Abhilabai Holkar Women Startup Scheme. So these two things has also been launched by him. Let's look at them one by one. So we are talking about National PM Vishwakarma program that has been addressed by Prime Minister Narendra Modi in Wardha, Maharashtra. Correct. And he released a commemorative stamp also published by India Post dedicating to mark 1 year of the progress under PM Vishwakarma scheme. This PM Vishwakarma scheme, this was launched in 2023 in the month of September to provide support to artisans and craft people working with their hands and tool. This was a central sector scheme that was launched with a financial outlay of 13,000 crore rupees. And it was launched for 5 years, that is from FY24 to FY28. Next is he laid the foundation stone of this PM Mitra Park in Amravati, Maharashtra. This will be a 1,000-acre park, will be developed by Maharashtra Industrial Development Corporation as the state implementation agency, and the government of India had proved that setting up of 7 PM Mitra parks will be there for the textile sector in the coming years. Next, if we talk about Acharya Chanakya Kaushalya Vikas scheme, under this scheme, skill development training centers will be developed in well-known colleges across Maharashtra to provide training to the youth between the age of 15 to 45 years of age. And the scheme will make the youth self-reliant and enable them to access various employment opportunities. Apart from this, 1,50,000 youths across Maharashtra will receive free skill development training each year.
Moving on, as you can see him in the picture, he is Amit Shah, he is our Home Minister. He has launched standard operating procedures on White Revolution 2.0 to boost Indian dairy sector. First of all, you should know this White Revolution, right? This is related to what? White Revolution is related to milk, or we can say related to the dairy sector. Correct? So this is your White Revolution to bring changes in them and to enhance this dairy sector. This White Revolution was bought. Correct? White Revolution, who is known as the father of White Revolution? Varghese Kurin. Right? He is known as the father of White Revolution. Why Varghese Kurin is known as the father of White Revolution? Because he developed various initiatives and he came up with various processes so that the milk production in India can be increased. Correct? Now, if we look at it here, during the main session of the conference, Union Minister Amit Shah has launched 100 Days initiative under this theme, that is Sahkar Se Samriddhi, to strengthen and expand the cooperative sector and benefit more than 13 crore farmers across the country in the dairy sector. Also, he also launched the standard operating procedures for the cooperation among cooperatives initiative and Margdarshika. Right, under this we will be seeing that during the initial phase or during this process, all the sectors or basically in the sector of the dairy, all the frameworks, all the people should be linked here. The target under this White Revolution is to increase production of dairy cooperative societies by 50%, that is from current of 660 lakh liters per day, and to increase it to 1000 lakh liters of milk per day in the next 5 years. Right, here the main focus will be on increasing women to increase the women participation in this sector, to increase the local milk production, also to strengthen dairy infrastructure and also promote the dairy products. This will help us to create job opportunities in the market in the India's dairy sector. Right, moving on. And if you see here, we also talked about that he launched Margdarshika. Right, what is this Margdarshika? Here he launched this Margdarshika. Margdarshika means an action plan, right? That how these societies will be working together. Correct? What are the processes of it? Correct? Who will they be reporting to? What will be the action plan? What will be the standard of procedures that will be operated here? Correct? Moving on. Next is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has completed 6 years of successful implementation. Correct? I repeat, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This is a flagship scheme of the Government of India, which was emerged during the National Health Policy, which has emerged from the National Health Policy of 2017. And this Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has recently successfully completed 6 years. Under this Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, remember, this is the largest health insurance scheme. Largest health insurance scheme. Under this, insurance of 5 lakh rupees per family member is provided by the government. Correct? And the scheme is fully funded by the central government. Fully funded by central government. Correct? And but we can say this, just say that it's fully funded by the Government of India, and the cost of it is shared between both center and state. Correct? But remember, it is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana that has completed 5-6 years, and this scheme is basically the largest health insurance scheme. Under this, insurance cover of 5 lakh rupees per family member is provided here. Correct? And here you can see the data also, that free health insurance coverage up to 5 lakh rupees per family member. Then moving on, next is Department of Agriculture and Farmers Welfare. They have released the third advance estimate FY24 of area and production of various horticulture crops. I repeat, the Department of Agriculture and Farmers Welfare, that comes under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Correct? They have released the third edition of the advance estimates for FY24, that is basically for the area and production of various horticulture crops. What are horticulture crops? Horticulture crops are crops you are related to, such as the vegetables that you are eating. Correct? So as per this data, the total horticulture production in India for FY24 is estimated to be around 353.19 million tons,
that has been an increase of 0.65% compared to last year of FY23. That means we have expanded our area on which we are growing these horticulture crops. This shows that the demand is increasing. That means we can say as population of India is increasing, the demand for it is also increasing, as well as we are seeing that now Indian exporters are also exporting these crops to different parts of the world, right? They are growing these crops here and then exporting it to different parts of the world. Also, we are seeing that with the help of these crops, multiple other products are being also developed. For example, your products related to medicine. We are seeing that these plants, these crops are being utilized in making medicines. They are used in making other cosmetic related products. They are used in making the aromatic spices, crops, and so many things, right? There is one more data. Remember, it is expected that the India's fruit production India's fruit production is also likely to increase by 2.29% in FY24, right? And this is basically, we can say, mango, banana, grapes, apple. We have seen significant demand of these fruits, and we are seeing that the in FY24 there was an increase in the fruit production by almost 2.29%. Correct? Take a note of this. Moving on. Next is Indian Army collaborated with FICCI and has unveiled Him-Drone-a-thon 2024 as well as Himtech 24 events in Ladakh. So first of all, it is our Indian Army, right? They hosted two major events. First was Drone-a-thon, right? This Drone-a-thon was basically held from 17th to 18th of September, and it was held where? In Varila of Leh area. And as the name suggests, Drone-a-thon, this event was basically to showcase the capabilities of drones in various sectors that include your aerial sector, groundwater sector, underwater drones, right? And so on. Correct? So to basically showcase the capabilities and the new drones, this Drone-a-thon was held. This was the first event. Second, if we talk about, we are talking about Him Tech. This Him Tech, basically, remember, this basically focuses on showcasing various new cutting edge technologies, equipments, various products that has been designed. Correct? This will help Indian Army in various operations, correct, in various day-to-day tasks also. So these are the two things, Him Drone-a-thon and Himtech 2024. So it was our Indian Army that hosted these two events in collaboration with FICCI that was held in Leh, correct? And apart from this, this Himedron, it was from 17th to 18th, and Himtech was held from 20 to 21st, and both were held in Leh. Who is the president of FICCI? Dr. Anish Shah. Moving on. Next is Madhya Pradesh State Election Commission has conducted the India's first paperless election. I repeat, it is the Madhya Pradesh state that has conducted the first ever paperless voting process or paperless elections. Correct? This is for the first time in India, and it was implemented during the elections of Panchayat. They were held by, correct, voting process without any paper. Take a note of this. And it was held in Ratua Ratanpur village, that is in the Bhopal, Madhya Pradesh, and it was held for the post of Sarpanch. As we know that in Panchayat, the topmost post is of Sarpanch, and it has recorded more than 84% turnout. Next, we are talking about international affairs. Jordan has become the first country globally to receive WHO verification for eliminating leprosy. Right? Leprosy, this disease is also known as Hansen's disease. Right? This is an infectious disease that is caused by bacteria, and the name of this bacteria through which this leprosy is caused is Mycobacterium leprae. Correct? So for the elimination of leprosy globally, correct,
Jordan, it became the first country to receive the WHO verification for the elimination of leprosy from their country. Correct? In this, we have seen that Jordan has successfully eliminated leprosy from their country through various strong political commitment, collaboration of their people and their policies, and effective health strategies that they have adopted. Right? We can say this leprosy, this is an old age disease that mainly affects your skins and peripheral nerves. Also, this can cause disabilities if untreated. If we talk about this leprosy, this is a neglected tropical disease that still occurs in more than 120 countries globally. And we record more than 2 lakh new cases of leprosy every year. Correct? So Jordan became the first country globally to receive this WHO verification for the elimination of leprosy from their country. If we talk about WHO, World Health Organization, who is the Director General here, Dr. Tedros Ghebreyesus, headquartered in Geneva, Switzerland, and established in 1948. Moving on. Next, we are talking about our India. India has participated in the G7 ministers meeting on the culture in Naples, Italy. I repeat, special session of G7, that is Group 7 G7 ministers meeting was held on culture. It was held from on 21st of September. Where was this held? Location is also important. It was held in Naples, Italy. Right here, Indian delegation was led by Arunish Chawla. Right, as you can see him in the picture, it was led by Arunish Chawla. Right, he is the secretary of the Ministry of Culture. Apart from this, remember this G7 ministers meet was presided by which country? It was presided by Italy. Right, and during this session, the Nepal statement was signed on the culture for sustainable development of Africa and the world. This will promote the culture as a driver of sustainable development in Africa. Important question can be asked. This Nepal statement was signed basically for what? It was for sustainable development of Africa and the world. The importance of culture as a transformative driver for the achieving sustainable development goals outlined the United Nations 2030 agenda here also. Moving on. Next is economy and business. Tata Electronics and TCS, they will develop India's first domestic chips by 2026. I repeat, it is TCS. They are collaborating with Tata Electronics Private Limited to launch India's first domestically produced semiconductor chips by 2026. Correct? Directly take a note of this. Apart from this, a $11 billion green chip manufacturing plant will be set up. Where it will be set up? In Dholera, Gujarat. So this is the first plant. Second plant is coming up in Assam. Right, this is $3.26 billion facility plant that will be in Assam, and it is expected they will be developing or starting the production of the chips by 2025 or early 2026. Next, take a note of this also. We are seeing that who is the new chief minister of Delhi now. As you can see here in the picture here, she is Atishi, right, and she has been appointed as the 8th chief minister of Delhi. This change comes after the resignation of Arvind Kejriwal when he came out of the jail. All right, and now he has resigned, and now Atishi, as you can see here in the picture, she is also a senior leader of Aam Aadmi Party. She now became the 8th chief minister of Delhi. She was appointed by the President of India Draupadi Murmu ma'am, and Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena administered the oath of office and secrecy of Atishi. Correct? Moving on. Next thing to remember here is that she became the 3rd woman chief minister of Delhi. Right? Also, she became the 17th chief minister, 17th women chief minister of India. Right? That means from Indian states. Correct? Next is Marxist leader Anura Kumara Disayanke. As you can see him in the picture, has been sworn in as the 9th president of Sri Lanka. Right? He is the leader of Marxist-Leninist Party, and he has been sworn in as the 9th president of Sri Lanka. Directly take a note of this. Next is Air Marshal Amarpreet Singh. As you can see him in the picture, has been appointed as the next Indian Air Force Chief.
Correct? He has been appointed as the next Chief of Air Staff. So question can be asked, who has been appointed as the new Chief of Air Staff? As you can see him in the picture, he is Air Marshal Amarpreet Singh. Correct? He will succeed whom? He will be succeeding Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, who recently retired. Then if we talk about him, he was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in 1984. Then he has more than 5,000 hours of flying experience. He has commanded an operational fighter squadron also, a frontline base, and also served as the commander of the Central Air Command. Next is acquisitions and mergers. Aditya Birla Capital has got RBI's nod, that means RBI's approval for the merger with Aditya Birla Finance. I repeat, Aditya Birla Capital Limited, they received the approval from RBI for amalgamation, that is basically for the merger of with Aditya Birla Finance Limited. Now remember, Aditya Birla Capital will now approach NCLT to complete this amalgamation process. Moving on, next is related to sports. McLaren's Lando Norris, as you can see him in the picture here, has won Singapore Grand Prix 2024. Right? This marks the Lando Norris third career win after Heineken Dutch and Miami Grand Prix. And if you remember, in Miami Grand Prix was the first victory of his life in which he secured the first position. He secured second or third position. He has done those podium finish, but for the first time he won the first victory or first podium finish on first position was in Miami Grand Prix. Then second was in Heineken Dutch Grand Prix, and now the third is in Singapore Grand Prix. If we talk about other winners, as you can see, first Lando Norris of McLaren, second Max Verstappen of Red Bull, and third Oscar Piastri of McLaren on the third position. Next, we are talking about important days. World Rivers Day observed on 22nd of December. This day is basically to create awareness about the importance of rivers and why the rivers are encouraged and maintained globally all over the world. Right? This day is observed generally on the 4th Sunday of September month. In 2024, it is on 22nd of September. In 2023, it was on 24th of September. And in 2025, it will be on 28th of September. Right? For the first time, this day was observed in 2005. Next is World Rhino Day. This day is observed on 22nd of September. This day is observed to create awareness about the rhinoceros. Right? It is one of the oldest group of mammals and they need protection. Correct? We need to conserve their ecosystem so that their species last long. Correct? And there are 5 species of rhinos that are currently living or available in the worldwide. So to maintain them and so that their population can flourish, this day is observed. World Rhino Day was first initiated by World Wildlife Fund in South Africa in 2010. Correct? So students, that's all for the day. Now let's move to the one-liners. PM Modi visited Maharashtra. Then Amit Shah launched standard operating procedure on White Revolution 2.0, basically to boost India's dairy sector. Then Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has completed 6 years of successful implementation. Department of Agriculture and Farmers Welfare released third advance estimate FY24 of area and production of various horticulture crops. Indian Army collaborated with FICCI and has unveiled Him Dronathon 2024 and Himtech 2024 events in Ladakh. Next is Madhya Pradesh SEC conducted India's first paperless election. Jordan became the first country globally to receive WHO verification for eliminating leprosy. India participated in G7 ministers meeting on culture in Naples, Italy. Then Tata Electronics and TCS to develop India's first domestic chips by 2026. AAP senior leader Atishi has been sworn in as the 8th Chief Minister of Delhi. Marxist leader Anura Kumara has been sworn in as the 9th President of Sri Lanka. Then Air Marshal Amarpreet Singh has been appointed as the next Chief of Air Staff of Indian Air Force. Then Aditya Birla Capital got RBI's approval for merger with Aditya Birla Finance. Then F1's driver, McLaren driver Lando Norris has secured first position in Singapore Grand Prix and this will be his third victory.
Then comes your World River Day on 12th or 22nd September and World Rhino Day on 22nd September. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part. In June, the 8th edition of the maritime exercise was held between Indian Navy and Japan Maritime Self-Defense Force at Japan. So what is the name of that exercise? It is JIMEX. JIMEX here stands for Japan India Maritime Exercise, right? And this is the 8th edition of the JIMEX exercise that was held in Japan. Next, Indian Navy recently launched Dash MCA barge at Vinayaga Marine Petrol Limited, Maharashtra, which was built by Seacon Engineering Limited. So what is the name of that MCA barge? It is LSAM 13, Yard 81. Right, this is the name of that MCA barge. Correct. That was developed by Seacon Engineering Limited. Next, the Indian Navy has received India's first indigenous man-portable suicide drone Dash, which is designed and developed by Economics Explosive Limited. So what is the name of it? It is Nagastra 1. This is the name of the India's first indigenous man-portable suicide drone. Right, so this is a drone. We can say this is a UAV. Right, we can say it? No, because UAV is unmanned aerial vehicle. It is a suicide drone, so we will call it as a UCAV. Right, that is unmanned combat aerial vehicle, because it will be used for the defense purpose or it will be used for your attacking purpose. Next, name the intercontinental ballistic missile that was recently tested by United States Air Force Global Strike Command and US Space Force Guardians from the Vandenberg Space Force Station in California, USA. So what is the name of that intercontinental ballistic missile? It is named as Minuteman 3. Right, take a note of this. Moving on, which company has recently secured DRDO's contract to develop underwater launched unmanned aerial vehicle? So which is that company that has secured the DRDO's contract for this underwater unmanned aerial vehicle? This is Sagar Defense Engineering Private Limited. This is the company, right? And this is Pune, Maharashtra based company that has received the contract from DRDO for this unmanned underwater launched aerial vehicle. Next, which company has recently received a request for proposal from the Ministry of Defense for 156 Prachand light combat helicopters worth 45,000 crore rupees? It is Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL. Correct? And the estimate cost for 156 Prachand light combat helicopters will be 45,000 crore rupees. Next, which country has recently launched Unmanned System Forces, the world's first military force dedicated to harnessing the power of unmanned warfare? It is Ukraine. Right? Ukraine is the country that has launched Unmanned System Forces, that is the world's first military force dedicated to harnessing the power of unmanned warfare. Next, which of the following forces has recently launched the first skin bank facility in New Delhi for advanced care of the personals and families? All those army personals, because of any attack or any incident, if their skin is get damaged, right, to help them, Armed Force Medical Services, AFMS, they have set up this in their facility. This new skin bank has been set up, right, at their headquarters at AFMS. Skin bank, this is the first of its kind skin bank facility in New Delhi. Question asked is that which force has launched this? It has been launched by Indian Army. And where is this located? At the headquarters of Armed Force Medical Service. Next, which of the following has recently signed an MOU with the Military College of Telecommunication Engineering to advance collaboration in next generation wireless technologies for the Indian Army? It is what? What is the right option here? It is Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, that is SAMEER. Next, with which company Ministry of Defense recently signed a contract to design and develop a
miniaturized satellite capable of carrying payloads up to 150 kilograms for the Indian Air Force. It is Space Pixel Technologies Private Limited, and it is being awarded as the first ever IDEX Prime Space Satellite Grant under the Mission Defense Space Open Challenges. And this marks 350th contract under the IDX initiative, that is the flagship program of the Ministry of Defense. Next, in June, Dr. Samir V. Kamath, the chairman of DRDO, handed over what to the Rear Admiral Brijesh Vasishtha, the Director General of Naval Armament Inspection of Indian Navy, at a ceremony in New Delhi. So, Dr. Samir V. Kamath, the chairman of DRDO, he handed over medium range microwave obscured chef rocket. Correct? Next, name the high speed expendable aerial target that is by heat that recently completed 6 consecutive development trials successfully by DRDO. This is Abhyas. Abhyas is the high speed expendable aerial target that has completed 6 consecutive development trials by DRDO. So these were your defense related. Now let's move to science and technology related questions. First is name the multi-mission communication satellite that was recently launched at the Shenzhen Satellite Launch Center in China using the Long March 3B carrier rocket. This is ParkSat MM1. Correct? So China, they have successfully launched Pakistan's multi-mission communication satellite that is named ParkSat MM1, and it was launched using Long March 3B carrier rocket. Next, name the China National Space Administration lunar probe that has recently made a soft landing on the moon's far side to collect and return samples. It is Chang'e 6. Right? So CNSA. Correct? They have made a soft landing on the moon's far side to collect the return samples. Next, which organization has recently developed the computational fluid dynamics software named Pravaha? Pravaha stands for Parallel Lens Solver for Aerospace Vehicle Aerothermodynamic Analysis. So this Pravaha software, correct, has been developed by whom? It has been developed by ISRO. Correct, and this was developed to basically test the thermodynamics of various projects or various satellites, right, rockets and so on, and it is a software. Next, name the satellite that was recently launched by European Space Agency to study the role of clouds and aerosols in Earth's climate. This is EarthCare, right? This is the name of the satellite that was launched by European Space Agency to study the role of the clouds and aerosols in the Earth's climate. Next, we are talking about homework. 3 current affairs related to national affairs for the past 3 months. You have to comment below. So that's all for the day, students. Do hit the like button and do comment below and let us know what are your views for the same. Also, students, if you haven't subscribed to us yet, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. Now, students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे 25 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज की वीडियो में 16 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर हम बात करेंगे वाइट रेवोल्यूशन 2.0 की। यहीं पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 6 साल पूरे कर लिए हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के। यहीं पे हम बात करेंगे कि कैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है एंड इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आगे फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं। यहीं पर हम बात करेंगे हिम ड्रोनेथॉन एंड हिमटेक, ये 2 इवेंट्स अभी कराए गए थे। इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट करके फिकी के साथ लेह लद्दाख में ये इवेंट्स हुए थे। इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने नए जुड़े हैं हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत ही अच्छा कंटेंट डेली बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided.
Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी ये महाराष्ट्र के विजिट पे थे 20 सितंबर को। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखा है ना कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम में, जिसका 1 साल पूरा हो गया है, राइट। देन इसके बाद याद रखेंगे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया पीएम मित्रा पार्क का। पीएम मित्रा पार्क कहाँ पर? अमरावती में, अमरावती महाराष्ट्र में, राइट। ये पीएम मित्रा पार्क बेसिकली आपके टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए है, ठीक है। किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए। फिर इसके बाद इन थर्ड चीज याद रखेंगे इन्होंने आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि वीमेन स्टार्टअप्स में वीमेंस को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। यहीं पे अगर विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो वर्धा महाराष्ट्र में इसको एड्रेस किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। एंड इन्होंने एक कमेमोरेटिव पोस्ट स्टैम्प भी यहाँ पे लॉन्च रिलीज की, जो कि पब्लिश की गई इंडिया पोस्ट के द्वारा, जो मार्क करती है 1 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा क्या स्कीम है? बेसिकली 17 सितंबर 2023 में लॉन्च की गई थी। आर्टिशंस, क्राफ्टमैन्स, राइट, इनको टूल्स, करेक्ट, जो भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड कराने की यहाँ स्कीम थी ये विश्वकर्मा स्कीम। एंड ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। इसके अंदर 13,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे आने वाले 5 साल के लिए, FY24 से FY28 के लिए। नेक्स्ट, एंड इवन यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था आर्टिशंस को, क्राफ्ट पीपल को, करेक्ट, इन 2 ट्रांचेस में, मतलब 2 बारी में, एक 1 लाख रुपए का और दूसरी बार 2 लाख रुपए का, विद टेन्योर ऑफ 18 मंथ्स एंड 30 मंथ्स। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा पीएम मित्रा स्कीम, पीएम मित्रा पार्क। ये एक टेक्सटाइल पार्क है, टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो करने के लिए महाराष्ट्र में अमरावती में इसको लॉन्च किया गया। 1000 एकड़ का ये पार्क रहेगा। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। एंड ऐसे 7 पीएम मित्रा पार्क्स को यहाँ सेटअप करने की बात की गई है। नेक्स्ट था आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम। इसका स्कीम का एम क्या है? स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। वेल नोन जो कॉलेजेस हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना और 15 से लेकर 45 की एज के बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपने सेक्टर में ग्रो कर सकें, सेल्फ रिलायमेंट हो सकें एंड वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो ढूंढ सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अमित शाह। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। इनके द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लॉन्च किए गए व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के लिए, ताकि इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ना, ये किस लिए होता है कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था व्हाइट रेवोल्यूशन को। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है? वर्गीस क्यूरेन। एंड इनके द्वारा जो प्रोसेसेस अपनाई गई थी, जो फ्रेमवर्क सेटअप किया गया था, जो नए इनिशिएटिव्स लाए गए थे ताकि मिल्क प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाया जा सके, इसीलिए इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, वर्गीस क्यूरेन को। अब पीएम मोदी के द्वारा अमित शाह के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब कि कैसे हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या आपके प्रोसीजर्स होने चाहिए कि हम अपने जो डेयरी सेक्टर है उसको ग्रो कर सके, राइट। तो उसको व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 बोला जा रहा है। अब देखो हम जानते हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, राइट, एंड इवन इंडिया प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है ग्लोबली। तो इसके चक्कर में हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है ना डेयरी प्रोडक्ट की, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमें दिख रही है। इवन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूरिंग द मेन सेशन यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने 100 डेज इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया, मतलब क्योंकि अभी जो थर्ड टर्म है सरकार का उसको 100 दिन हो गए हैं, तो उसके ध्यान में रखते हुए 100 डेज इनिशिएटिव लॉन्च करते हुए यहाँ पे इंडिया में जो इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसको ग्रो करने की बात की गई। इसके अंदर हम देखेंगे जॉब क्रिएशन के ऊपर बात की जाएगी, इसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे फार्मर्स को
उनकी इनकम बढ़ाने के लिए हेल्प किया जाएगा, उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, एंड इवन डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आगाह कराया जाएगा। इवन हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 के अंदर हम मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ाएं ही बढ़ाएं, इवन जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसमें भी 50% का इजाफा हम देखें। इनका टारगेट है कि जो मिल्क अभी हम 660 लाख लीटर्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, ये बढ़कर 1000 लाख लीटर्स पर डे हो जाए आने वाले 5 सालों के अंदर। करेक्ट, ये मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे अभी मार्गदर्शिका भी एक चीज लॉन्च की गई है, इनिशिएटिव। बेसिकली मार्गदर्शिका क्या है, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि हम आने वाले टाइम में अपने सेक्टर्स को ग्रो कर सके, क्या प्रोसेसेस को फॉलो करना है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका 6 साल पूरे हो गए, इसकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन अभी हमें देखने को मिली। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, याद रखेंगे, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर होता है आपका पर फैमिली मेंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर हम देखेंगे ये स्कीम आपकी सितंबर के महीने में 2018 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी जब वो झारखंड में थे। एंड इस स्कीम के 6 साल पूरे हुए इम्प्लीमेंटेशन के, इसलिए स्कीम को यहाँ पे अभी या फिर इसको सक्सेसफुल कंप्लीटेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड इवन इस स्कीम के अंदर हम देखेंगे इस 3 दिन तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। एंड इवन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको जो सीनियर सिटीजन 70 साल एंड अबव है उन तक भी स्कीम को यहाँ पे ले जाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिलीज किया 3rd एडवांस एस्टिमेट्स FY24 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। देखो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आ जाती हैं ये आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, जैसे इंडिया की अब डिमांड बढ़ रही है तो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स है इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की वो भी हमें बढ़ती हुई दिख रही है। अब नए नए रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, राइट, नए नए कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, नई नई खाने की जगह बाहर खुल रही हैं। करेक्ट, तो इससे क्या हो रहा है, जो डिमांड है ना इन क्रॉप्स की वो भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ डोमेस्टिकली घर पे यूज़ होती थी, लेकिन अब उन होटल्स में भी यूज़ हो रही हैं। इवन इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया, इंडिया हेविली एक्सपोर्ट भी अब बहुत ज़्यादा फोकस है इंडिया का कि हम प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट करें। तो इससे भी हम देखेंगे कि जो डिमांड है, वो जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको ग्रो कर सकें, वो भी बढ़ेगी। और इसी का असर दिख रहा है कि जितने एरिया पे पहले हम क्रॉप्स ग्रो करते थे उसमें अब हमें इजाफा होते हुए दिख रहा है। करेक्ट, ये रिपोर्ट अभी जो रिलीज की गई है 3rd एडवांस एस्टिमेट FY24 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये बताती है कि जो एरिया हम ग्रो करते थे क्रॉप्स का पहले, उसमें हमें इजाफा होता हुआ दिख रहा है। द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एक्सपेंडेड टू 28.98 मिलियन हेक्टेयर्स इन FY24, जो कि 28.63 मिलियन हेक्टेयर था एक साल पहले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें इजाफा होते हुए दिख रहा है मिलियन हेक्टेयर्स में। यहीं पे आप देखेंगे कि इंडिया में जो फ्रूट्स की डिमांड है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। एंड इंडिया ने जो फूड प्रोडक्शन है उसमें भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई। फ्रूट्स हमारे 2.29% ज़्यादा ग्रो हुए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। फ्रूट्स में बात करें जैसे मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, इनकी ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिली है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी के द्वारा 2 इवेंट्स अभी कराए गए इन कोलैबोरेशन विद फिक्की। पहला आ जाता है हिम ए थॉन। ये हिमेथॉन जैसा नाम दिखा रहा है, करेक्ट, हिम ड्रोनेथॉन, आई करेक्ट माई सेल्फ, हिम ड्रोनेथॉन। बेसिकली ड्रोन्स को प्रमोट किया गया है, यहाँ पर ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ को शोकेस किया गया है। एंड एरियल, वाटर, ग्राउंड, अंडर वाटर,
इन सब जगह पर ड्रोन्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में इस हिम ड्रोन एथोन में दर्शाया गया है। कहाँ पर हुई थी, ये ले में हमें देखने को मिली। दूसरा आ जाता है इवेंट, वो है हिमटेक। हिमटेक टेक आ गया तो यहाँ पे वेरियस टेक्नोलॉजीज को दर्शाया गया है, उनकी कैपेबिलिटीज को दर्शाया गया है कि क्या हम नए इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी फोर्सेस में इंप्रूवमेंट ला सकें, करेक्ट, एंड उनकी जो पावर है उसको एनहेंस कर सकें। ठीक है, तो हिमड्रोनेथ्रॉन एंड हिमटेक ये दोनों इवेंट्स इंडियन आर्मी के द्वारा कराए गए इन कोलैबोरेशन विद फिकी, और ये कहाँ पर हुए, लेह लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन्होंने कंडक्ट कराया है इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन। पंचायत का ये इलेक्शन था, सरपंच को यहाँ पे चुना गया था इस इलेक्शन से, जो कि पेपरलेस इलेक्शन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रतवा रतनपुर विलेज में। कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। ये पेपरलेस इलेक्शन हमें देखने को मिला है, पहला पंचायत में हुआ था, पंचायत के इलेक्शंस हुए थे ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि SEC ने इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन कहाँ पर कराया है, तो ये रतुआ रतनपुर विलेज में कराया, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जॉर्डन वो पहली कंट्री बन गई है ग्लोबली जिन्होंने एलिमिनेट करा है लेप्रोसी को। लेप्रोसी एक ओल्ड एज डिजीज होती है, राइट। लेप्रोसी को एक और नाम से जानते हैं, वो है हांसेंस डिजीज। हांसेंस डिजीज ये बैक्टीरिया से फैलती है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिससे लेप्रोसी फैलती है, वो है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, राइट। एंड हमें 2 लाख से भी ज़्यादा हर साल इसके केसेस देखने को मिलते हैं लेप्रोसी के। बेसिकली ओल्ड एज में ही ये आपकी फैलती है एंड इससे आपके जो स्किन है एंड पेरिफेरल नर्व्स है उस पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, 120 कंट्रीज से भी ज़्यादा में इसका इफेक्ट रहता है एंड WHO इसको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करता है। तो यहाँ पर अभी जॉर्डन वो पहली कंट्री बन गई जिनको ग्लोबली, यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बन गई ग्लोबली जिन्होंने रिसीव किया WHO वेरिफिकेशन को कि इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है लेप्रोसी को अपनी कंट्री से। ठीक है, तो ये है जॉर्डन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया G7 मिनिस्टर्स मीटिंग में ऑन कल्चर, जो कि नेपल्स में हुई, इटली। कौन प्रिजाइड कर रहा है इस G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन कल्चर के ऊपर, ये प्रिजाइड की जा रही है इटली के द्वारा। एंड यहाँ पर इंडियन डेलीगेशन कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन कल्चर में, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अरुणीश चावला। अरुणीश चावला इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया यहाँ पे G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन कल्चर की, जो कि नेपल्स इटली में हुई। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि कैसे हम कल्चर को प्रमोट करते हुए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करके अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हम कैसे डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं, राइट। कि कल्चर को भी प्रिजर्व कर लें एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम उन एरियाज को डेवलप कर सकें, स्पेशली इन अफ्रीका। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड TCS ये भी डेवलप करेंगे इंडिया का पहला डोमेस्टिक चिप्स बाय 2026, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 जगह पे इनका प्लांट सेटअप किया जा रहा है, एक तो ढोलेरा गुजरात में एंड दूसरा है असम में। इनकी जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, जो चिप्स बनाई जाएंगी वो 2026 तक इनकी प्रोडक्शन, यहाँ पे अर्ली 2026 तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो ढोलेरा वाला प्लांट है $11 बिलियन के लागत का ये प्लांट रहेगा यहाँ पे, एंड जो असम वाला प्लांट है $3.26 बिलियन की ये फैसिलिटी रहेगी जहाँ पे चिप्स को मैन्युफैक्चर करा जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं अतिशी, ये 8वीं चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। अगर हम देखें तो ये 3rd वीमेन चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। एंड अगर मैं इंडिया की स्टेट्स में बात करूं तो ये 17th, अगर इंडिया की पूरे वर्ल्ड इंडिया की टर्म्स में बात करें तो 17वीं वीमेन बनी जो कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की। करेक्ट, ये अपॉइंटमेंट आता है आफ्टर अरविंद केजरीवाल, राइट, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से जब ये जेल से बाहर आए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस।
करेक्ट। तो अब इनको अतिशी को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया जो कि आपकी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट लीडर अनुराग कुमारा, आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये नए 9th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं श्रीलंका कंट्री के। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को। करेक्ट। अगर इनकी बात करें अमरप्रीत सिंह की, ही वॉज इन टू फाइटर स्ट्रीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। करेक्ट। इनको अपॉइंट कमीशन किया गया था फाइटर स्ट्रीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स 1984 में। देन इनको 5000 घंटे से भी ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। करेक्ट। इन्होंने मिग 29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया है मॉस्को रशिया में, एंड सो ऑन। इनको परम वशिष्ठ सेवा मेडल एंड अति वशिष्ठ सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। तो अभी आदित्य बिरला कैपिटल, इनको आरबीआई का अप्रूवल मिला है ताकि आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ मर्ज हो जाए, अमालगेशन कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे लैंडो नॉरिस को देख सकते हैं। ये मैक्लेरन के ड्राइवर हैं और इन्होंने अपनी करियर की फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर लिया है। सबसे पहले इन्होंने अभी सिक्योर करी थी मियामी ग्रैंड प्रिक्स में, बहुत सालों बाद इन्होंने, क्योंकि ये फर्स्ट कभी नहीं आए थे, बाकी हर पोजीशन इन्होंने सिक्योर करी थी। मियामी ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी थी। फिर इसके बाद हेनिकन डच ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, और तीसरी बार अब सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली है। ये है लैंडो नॉरिस। राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन लैंडो नॉरिस, सेकंड मैक्स वर्स्टैपन ऑफ रेड बुल एंड थर्ड ऑस्कर पिएस्ट्री ऑफ मैक्लेरन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे। 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रिवर्स डे। बेसिकली इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 4th संडे ऑफ सितंबर मंथ। ठीक है। एंड ये बेसिकली जो रिवर्स है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है कि हमें कैसे रिवर्स को, उनकी कंजर्वेशन को एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए। इस साल 2024 में इस डे को 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है। 2023 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 24 सितंबर को, एंड 2025 में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा 28 सितंबर को। ठीक है। एंड पहली बार इस डे को 2005 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। 22 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है राइनोज की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इनके हैबिटेट को प्रोटेक्शन प्रमोट करने के लिए। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ मैमल्स। 5 स्पीशीज़ राइनोज की बची हुई हैं ग्लोबली, एंड इनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि इनकी स्पीशीज़ फ्लरिश कर सके, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे पहली बार इनिशिएट किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ऑफ साउथ अफ्रीका। 2010 में इस डे को इनिशिएट करा गया था। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पे। पीएम मोदी विजिटेड टू महाराष्ट्र, 20 सितंबर को हमने देखा। अमित शाह के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लॉन्च किए गए ऑन वाइट रेवोल्यूशन, ये हमने देखा इंडिया की डेयरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 3rd एडवांस एस्टीमेट 24 को रिलीज़ किया। करेक्ट। जहाँ पे बताया कि हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हमें अब और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, एंड इवन हमें ग्रोथ दिख रही है ताकि हम डिमांड को फुलफिल कर सकें। इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया फिक्की के साथ एंड अनवेल्ड हिम ड्रोनेथॉन एंड हिमटेक 2024 इवेंट्स लद्दाख में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश SEC कंडक्टेड इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन। जॉर्डन वो पहली कंट्री बन गई जहाँ से लेप्रोसी को एलिमिनेट किया गया, एंड WHO वेरिफिकेशन से इनको सम्मानित किया गया। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया G7 मिनिस्टर्स मीट ऑन कल्चर, जो कि नेपल्स इटली में थी एंड इटली के द्वारा प्रिजाइड की गई थी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड TCS ये दोनों मिलकर अभी इंडिया की पहली डोमेस्टिक चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 2026 तक। आप सीनियर लीडर अतिशी ये 8वीं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं दिल्ली की, एंड थर्ड वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। मार्क्सिस्ट लीडर अनुराग कुमारा, इनको अपॉइंट किया गया 9th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। देन एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, नॉट आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। देन आदित्य बिरला कैपिटल, इनको अप्रूवल मिला RBI का ताकि ये मर्जर कर सकें विद आदित्य बिरला फाइनेंस। देन मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस, ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिया। वर्ल्ड रिवर्स डे 22 सितंबर एंड वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर।
द 8th एडिशन ऑफ विच मैरीटाइम एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एट जापान। तो यह है जाइमैक्स। जाइमैक्स क्या है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, और ये 8th एडिशन है इस जाइमैक्स का। नेक्स्ट, द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च्ड डैश MCA बार्ज एट विनायंगा मरीन पेट्रो लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र में है, विच वॉज बिल्ट बाय सीकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस MCA बार्ज का क्या नाम रहेगा? LSAM 13 यार्ड 81। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स, जिसका क्या नाम है, जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है बाय इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। तो नगास्त्रा 1, इसका नाम नगास्त्रा 1 है, ये आपका मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल दैट हैज़ वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय यूनाइटेड स्पेस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एंड US स्पेस फोर्स गार्डियंस फ्रॉम वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया USA से इसको टेस्ट किया गया था। तो क्या नाम है उस इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का? वो है माइन्यूट मैन 3। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सिक्योर किया DRDO का कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल? तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वर्थ 45,000 करोड़ रुपीस? तो किसको रिसीव हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस को, जो कि वर्ल्ड का पहला मिलिट्री फोर्स है डेडिकेटेड टू हार्नेसिंग द पावर ऑफ अनमैन्ड वॉरफेयर? वो है यूक्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी इन न्यू दिल्ली फॉर एडवांस केयर पर्सनल्स एंड फैमिलीज? देखो, स्किन बैंक फैसिलिटी क्या है कि जो आर्मी में लोग होते हैं, राइट, मान लो कोई इंसिडेंट हो गया एंड उनकी कोई बॉम्ब या फिर जलने से किसी भी रीज़न से, या फिर कोई गन मार्क आ गया, आपके नाइफ का मार्क आ गया, तो उस लिए स्किन को क्योर करने के लिए, करेक्ट, सर्जरी करने के लिए ये स्किन बैंक फैसिलिटी सेटअप की गई है। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज पे ये सेटअप की गई है इनके द्वारा, इनके हेडक्वार्टर पर, राइट। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लॉन्च दिस फर्स्ट स्किन बैंक फैसिलिटी? तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टू एडवांस कोलैबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर द इंडियन आर्मी? वो है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर के द्वारा ये यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया फॉर द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, विद विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू डिजाइन एंड डेवलप अ मिनिचराइज सैटेलाइट कैपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स ऑफ अप टू 150 kgs फॉर द इंडियन एयरफोर्स? तो वो रहेगा स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इन जून डॉक्टर समीर V कामत, जो कि DRDO के चेयरमैन हैं, इन्होंने हैंड ओवर किया मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्रेंट शेफ रॉकेट टू द रियर एडमिरल ब्रिजेश वशिष्ठा, जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन की ऑफ इंडियन नेवी, एट ए सेरेमनी जो कि न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उस हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताओ दैट रिसेंटली कंप्लीटेड 6 कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल्स सक्सेसफुली बाय DRDO? तो उसका नाम रहेगा अभ्यास। ठीक है, चलिए ये तो हो गए डिफेंस के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। पहला क्वेश्चन, नेम द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च की गई एट द शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना यूजिंग लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट? तो उसका नाम रहेगा पार्कसैट MM1। नेक्स्ट, नेम द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस लूनर प्रोब दैट रिसेंटली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून्स फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स? तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का? वो है चेंगी 6, चाइना की है, मून के फार साइड पे इन्होंने लैंड किया, करेक्ट, ताकि वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके ये वापस आ सके फॉर रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर नेम्ड प्रभा? प्रभा क्या है? पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल
एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ये कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर प्रभा को? तो ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द रोल ऑफ क्लाउड्स एंड एरोसोल्स इन अर्थ्स क्लाइमेट। तो वो है अर्थ केयर, राइट। अर्थ केयर के द्वारा, उस सैटेलाइट का नाम है अर्थ केयर, जिन्होंने लॉन्च किया किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद जाक्सा के साथ मिलकर इन्होंने अर्थ केयर को लॉन्च किया है, ताकि क्लाउड्स और एरोसोल इनका क्या हम स्टडी, इनका क्या रोल रहता है, इनकी क्या प्रोसेस रहती है अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने में। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट ऑफ किया गया टू स्पेस ऑन इट्स मेडन वॉयज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स। ये है बोइंग। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही हैं। इनको काफ़ी पहले वापस आ जाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही फंसे हुए हैं। एंड माना जा रहा है कि ये 2025 तक इसमें फंसे रहेंगे एंड 25 के स्टार्टिंग मंथ्स में ये वापस आएंगे। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट मिशन दैट इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन 2025 बाय इसरो विद कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस CNES। तो क्या नाम रहेगा? तृष्णा। इसरो एंड CNES मिलके इन्होंने इस तृष्णा को लॉन्च किया। तृष्णा क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। नेक्स्ट, नेम द लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय SpaceX that has recently completed the first full flight test returning to Earth, followed by a soft splashdown of the boosters Gulf of Mexico में and the spacecraft in the Indian Ocean। तो बूस्टर्स गिरे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, स्पेसक्राफ्ट गिरा इंडियन ओशन में। क्या नाम है उस लॉन्च व्हीकल का? वो है स्टारशिप। नेक्स्ट, रिसेंटली इन जून द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन हैज़ नेम्ड 3 न्यूली डिस्कवर्ड क्रेटर्स ऑन मार्स, राइट। इनको डिस्कवर किया गया बाय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, राइट। एंड जो बिगेस्ट क्रेटर है उसका नेम रखा गया एक कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट के ऊपर, उनका नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। 3 क्रेटर्स क्या रहेंगे? लाल क्रेटर, दूसरा है आपका मुरसान क्रेटर, फिर आ जाता है हिल्सा क्रेटर। ये 3 क्रेटर हैं। मुरसान एक टाउन है यूपी में, हिल्सा एक टाउन है बिहार में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स होमवर्क। तो 3 करंट अफेयर्स आपको बताने हैं रिलेटेड टू नेशनल अफेयर्स। तो दोस्तों सेशन पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम बहुत अच्छा कंटेंट डेली बेसिस को आपको प्रोवाइड कराते हैं।